में तो कोई नहीं लगता, मैं वही तो दौड़ की Mitri and share my voice is audible. Yes, sir. Okay, right. Okay, so in the previous class we have started the properties of definite integrals. Homework हो गया सबका? कुछ लक्ष्य मित्री Yes, sir. complete NCERT आपको मैंने दिया था homework, miscellaneous सब हो गया? Sir, miscellaneous से कुछ questions बताइए. अभी बचे हैं. Okay, लक्ष्य and कुछ miscellaneous हो गया complete? Miscellaneous नहीं हुई, exercises हो गई. Exercises हो गई हैं. ओके ठीक है, कल तक प्लीज मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए. आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो कल आपके जो भी डाउट्स हैं मिसलेनियस में उसको फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आई गेस हम प्रॉपर्टी 4 कर चुके हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 5. प्रॉपर्टी 5, दिस प्रॉपर्टी इज 0 to 2a 0 to 2a fx is equal to 0 to a fx plus 0 to a dot x plus 0 to a f to a minus x dot x. So अगर हमारे पास है 0 to 2a, then we can break that into 0 to a fx plus again 0 to a f to a minus x. We will do the proof of this. 0 to 2a fx dot dx, this is equal to, we can break this limit 0 to a fx dot dx plus a to 2a fx dot dx. ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये हमने स्टार्टिंग में किया था. We can break this limit into 0 to a plus a to 2a fx dot dx. Now after this remain as it is, 0 to a fx dot dx. Okay, and this one we will take as I1. So let I1 is equal to a to 2a fx dot dx. Okay, a to 2a fx dot dx. Now let x is equal to 2a minus t. Now differentiate this. 1 is equal to minus dt by dx. So we will get dx is equal to minus dt. Now this will give us I1 is equal to, in place of x we can write 2a minus t. In place of dx we can write minus dt. Okay, now we will change the limit. When this is a, you will put a over here. तो कितना हो जाएगा? T is equal to a is equal to 2a minus t. So t will give you a. When you put 2a here, so 2a is equal to 2a minus t. So t कितना हो जाएगा? T will be 0. Okay. So finally, we will get this one, that I1 is equal to, this is negative, यहाँ negative put कर देते हैं, a to 0 f 2a minus t dot dt. Now this I1 is equal to, because of this, अच्छा अब हम अगर limits को interchange करते हैं, then we will get 0 to a, when negative sign आएगा which will make this positive. है ना, हमने previously किया था, whenever we will interchange the limits, then we will get a negative sign. So ये positive हो जाएगा. So we will get 2a minus t dot dt. Now we have one more property, that definite integral is independent of variable. So in place of this t we can put anything, x, y, z, p, कुछ भी हम put कर सकते हैं. So we will write 0 to a
f2a minus x dot dx. ठीक है, just this one. इसको अगर हम यहाँ put कर देंगे, then we will get the property. Please note down this, confirm me, then we will try some questions. Okay, good, very good. Mithri and Lakshya, please confirm. Okay, Lakshya, very good. Mithri, please confirm. एक मिनट sir. Okay, okay. Lakshya, property 6 है. Okay then. Done sir. Okay, very good. Now, next is we have this one. Okay, let's just be first. So put I1, put I1 in first. I1 को first में put कर देते हैं. First क्या था? This one, 0 to a fx dot dx. So कितना हो जाएगा ये? So property is 0 to 2a fx dot dx is equal to, ये हमारे पास पहले था 0 to a fx dot dx. Next I1 की अगर हमें value put करनी है, then this is I1. 0 to a f2a minus x dot dx. So I1 हम यहाँ लिख सकते हैं 0 to a f2a minus x dot dx. So Kush, Mithri and Lakshya. This clear? So this is our property. ठीक है, तो क्या होगा अगर 0 to 2a है, then we can write 0 to a fx dot dx plus 0 to 2a f2a minus x dot dx. Okay. Now on the basis of this, we will write two questions. Question first is this one. 0 to 2 pi, then 1 by 1 plus e sine x dot dx. Please try this question. Very good. This is correct.
Yeah, very good. This is correct. Mitri, please share your answer. Mitri, complete हो गया आपका? एक मिनट सर, एक मिनट सर. Okay. No, Mitri, this is not 2 pi. This is pi. Pi, very good. Please start the next one. Question 2. And it's 0 to pi. 1 pi. 1 plus exponential cos x dot dx. Okay, please write. Kush, very good. That's correct. Mitri and Lakshya, if you have any doubt, then please let me know.
सो एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए. With the same method use करना है which you have used over here. Okay. 2 नहीं है लक्ष्य 5/2. Okay. Very good लक्ष्य. That's correct. With 2 का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 2 पाई ही होगा. For example, अगर हमारे पास 0 to pi है, तो we can use this formula. We can say that this is 2 into pi/2. ठीक है मित्र? Yes, sir. Now please apply the formula. Mitri, very good. This is correct. Okay. Good. Now, from the same formula, we can find out one more property. The next property is property 7. Okay. Property 7 is 0 to 2a fx dot dx is equal to twice of 0 to a fx dot dx. Okay, if f2a minus x is equal to fx and this is equal to 0 if f2a minus x is equal to minus fx. Okay, so this is our next property. 0 to 2a fx dot dx, this is equal to twice of 0 to a fx dot dx if fa2a minus x is equal to fx. We'll do the proof of this. We already know this property. 2a fx dot dx, this is equal to 0 to a fx dot dx plus 0 to a plus 0 to a f 2a minus x dot dx. Okay, we already have this property. Now, first is if f2a minus x is equal to fx. अगर हमारे पास ये केस है then क्या होगा? This is 0 to a fx dot dx plus, now here we can put 0 to a fx dot dx. So this will become twice of 0 to a fx dot dx. Similarly, if f2a minus x is equal to minus fx, put this one in first. So क्या हो जाएगा? This is 0 to a fx dot dx plus, in place of this अगर हम इसको put करते हैं then we will get a negative minus 0 to a fx dot dx. Now this will cancel out and finally we will get a 0. Okay, so Mitri and कोई लक्ष्य this clear? Mitri कुछ लक्ष्य? Yes, sir. Okay, very good. Please note down this, confirm me, then we will try one question.
Okay, Kush, very good. Maitri and Lakshya, please confirm. Done, sir. Okay. Lakshya, this time. Okay. Then we will try one question. Okay, so the question is 0 to 2 pi sine to the power 7x dot x. Please tell me the answer. Very good. That's correct. Maitri and Lakshya, if you have any doubt, then please let me know. Lakshya and Maitri, doubt is my good. 0 to 2 pi. So we have this one. Fx is equal to sine 7x. Okay. So f 2a minus x means here in place of 2a we have 2 pi. So 2 pi minus x is equal to sine 2 pi minus x to the power 7. So this will become what? Minus sine x to the power 7. So this will give us minus sine 7x. So what will this become? This will become अब आप properly apply कर सकते हैं. Negative आ रहा है. So Maitri and Lakshya, what is the answer? Lakshya and Maitri, what is the answer? 0. Very good. ठीक है Lakshya. So you need to write the complete property. उसके बाद फिर आप directly 0 लिख देंगे. ठीक है. Lakshya, any doubt in this? No, sir. Okay. Okay. चलिए इसे मुझे बताइए what is the answer of this? 0 to 2 pi cos 5x dot x. Okay. Please try this one. Maitri, very good. That's correct. Lakshya, very good. That's correct. Kush, हो गया ये solve?
Push. This is done. Push. Please confirm. Mitri and Lakshya, please try this question. Okay, this question is from NCRT और ये काफी lengthy question है. Please try to do this. Minus pi by 2 log 2. Okay. Please do this question. Last question हो गया था. Yes, sir. Okay, okay. Maybe this is correct. Mitri, हो गया proof? Pi by 2 log 2 minus pi by. Okay, okay, very good. Okay, Kush, very good. Lakshya, if you have a doubt, then please let me know. ठीक है? थोड़ा सा tricky question है. सॉल्व कर रहा हूँ. Okay, okay.
Done, sir. Okay, very good. लक्ष्य बताएंगे मुझे कैसे स्टार्ट किया? I is equal to, पहले log sin x और क्योंकि log cos x को क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबका डाउट होगा इसमें, बट ये सबने कर लिया. ओके, सो I is equal to this. ठीक है लक्ष्य, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? प्लस log cos x. फिर आपने प्रॉपर्टी प्लस log cos x कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई की ना? Yes, sir. I is equal to, let this be first, फिर आपने अप्लाई किया होगा दैट 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dot x. This become I is equal to, I is equal to 0 to pi by 2 log cos x dot x. Okay, this is 2. फिर आपने 1 and 2 को ऐड किया होगा, add 1 into, then you get this one. 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin x plus, okay, dot dx plus 0 to pi by 2 log cos x dot dx. And finally you get this one. 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin, और आपने इसको ऐड कर दिया होगा, then you will get this one log sin x into cos x. ठीक है, ऐसे किया था. Yes, sir. Alicia, what's the next step? So sin x log cos x को मतलब sin 2x by 2 के फॉर्म में. अच्छा, very good. Then in that case आपने log 2 से 2 multiply Yes, and divide log कर दिया. common. Yes, sir. Very good. So ये आगे होगा 2i is equal to 0 to pi by 2. Okay, so ये आगे आपके पास sin 2x dot dx minus log 2 dot dx 0 to pi by 2. ठीक है, अब ये तो सॉल्व हो जाएगा इन्होंने. ये कैसे सॉल्व किया? सर फॉर्मूला लगा के which formula? sin 2 थीटा. इसको किसमें चेंज किया मित्र? 2 sin x cos x. यस सर. बट मित्र ये तो यहीं से आया था. 2 sin x cos x तो यहीं से था. ओके, नॉट इशू. ठीक है, मुझे बताइए. फिर आपने इसको 2 sin x cos x कर दिया. आफ्टर दिस एक मिनट सर, मैंने पहले sin 2x के बाद उसमें पहले वो था, उसके बाद sin 2x किया था. ठीक है, कोई बात नहीं. अब मित्र इसके बाद फिर सर अब हमने वैल्यू अच्छा यस सर, एक्चुअली मैंने t लिया था ना, 2x को करके t. ओके, आपने लेट कर लिया था. लेट t is equal to 2x. यस. Very good. Then you get dt by dx, so this is equal to 2 dot dx. फिर आपने इसको लिख दिया 2i is equal to 0, ये बाद में चेंज करेंगे sin t. ओके, एंड dx कितना आ गया? dt by 2. ओके, अब t क्या है? 2x, तो 0 पुट किया 0 एंड x pi by 2 पुट किया, गेट अ pi. अच्छा, आपने इसको फिर यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, वेरी गुड. दिस करेक्ट. और नेक्स्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. फिर आई गेस 7 प्रॉपर्टीज हो गई. प्रॉपर्टी 8. Okay, property 8 is if we have this one minus a to a. Okay, minus a to a fx dot dx. So this is equal to twice of 0 to a fx dot dx if fx is even function. If fx is even function. Okay.
if fx is even function, and this is equal to 0 if fx is odd function. Okay. तो अगर हमारे पास है -a to a fx dot dx, then the formula will be twice of 0 to a fx dot dx is if fx is even function, and this is equal to 0 if fx is odd function. So first of all, we will discuss that what is even and odd function. Even function क्या होता है? When f minus x is equal to fx. Okay. Even function क्या होगा? F minus x is equal to fx. Then this is the even function. For example, fx is equal to x square, or fx is equal to cos x, or fx is equal to mod x. So all these are the example of even function. This is clear? Maitri, question and Lakshya? Yes. Okay. Okay, question. Maitri, this is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next is odd function. So what is the odd function? If f minus x is equal to minus fx, then we will say that this is a odd function. For example, fx is equal to x, fx is equal to sin x, fx is equal to tan x. So all these are the example of odd function. Okay, so this is clear. What are even and odd function? Even function when f minus x is equal to fx. Odd function when f minus x is equal to minus fx. Okay, so please note down this and confirm. We will first prove this, then we will try some questions on the basis of this one. Maitri and Lakshya, please confirm once this is done. Done, sir. Okay, Maitri and Lakshya. Now, you do the proof of this one. We have this minus a to a fx dot dx. Okay, this is equal to minus a to 0 fx dot dx plus 0 to a fx dot dx. ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में ना, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं. Minus a to a, we can put a 0, minus a to 0, then 0 to a. This is fine. Let this one. Let I1, this will first, let I1 is equal to minus a to 0 fx dot dx. Okay. Now let x is equal to minus t. And this I1 will become, this one is equal to minus dt by dx. And this is dx is equal to minus dt. So ये क्या हो जाएगा? This will give you fx means f minus t हो जाएगा. In place of dx you have minus dt. Limits में क्या change आएगा? When we will put here a minus a, then this become a. जब 0 put करेंगे, then 0. So this will give us I1 is equal to minus, okay, f minus t dot dt. Okay, and this is a to 0. Now again, if we will interchange the limits, then this will become I1 is equal to 0 to a. Okay, negative sign positive हो जाएगा फिर, and this is f minus t dot dt. Now again the same property, that definite integral is independent of the sign. So we will put in place of, we can put in place of t x. So this will become f minus x dot dx. Now put this value in first one. ठीक है, ये हमने I1 let किया था this one. So
So in place of this, we can put here this value. So put I1 in first. तो क्या हो जाएगा? minus a to a fx dot dx. This is equal to, okay, and this will be 0 to a f minus x dot dx plus 0 to a fx dot dx. Now please check if this is the odd function, तो ये negative हो जाएगा, this will cancel out, and if this is a even function, ये add हो जाएगा. Okay, please note down this. बस एक last step कर, property is complete. फिर question strike करते हैं on the basis of this. Okay, lecture good. Mitri, push, please confirm. Okay, push. Done, sir. Done, sir. Done. Okay. Now, what we will do? Okay, अब हमारे पास finally आ गया है this one. So this is equal to finally we get this is equal to 0 to a f minus x dot dx plus 0 to a fx dot dx. Okay, so क्या हो जाएगा? Now if f minus x is equal to minus fx, in bracket we can write fx is odd function. Fx is odd function. So if this is odd function, then this will give minus a to a fx dot dx is equal to 0. And if f minus x is equal to fx, fx is even function. Fx is even function. Okay. If this is even function, then minus a to a fx dot dx, this will give us twice of 0 to a fx dot dx. I hope this property is clear to everyone. Please note down this, then we will try some questions on the basis of this property. Please note down this, confirm, then we will start some questions. Okay, Bush, I got your message. Done, sir. Okay, Maitri, very good. Lakshya? Okay, Lakshya, very good. Please try this question. Minus pi by 2 to pi by 2 sine 7x dot dx. Okay. Please try this.
Good, very good. This is correct. Mitri, very good. This is correct. Then question Mitri, start this question. Sin square x dot dx, and Lakshya, very good. This is correct. Please start the next question. Okay. So Mitri, your answer is correct. Kush, negative नहीं आना चाहिए. Answer should be pi by 2. Please check कीजिए कुछ answer. And Mitri, very good. Lakshya, very good. This is correct. Answer is pi by 2. Then please start this one. Pi by 2. Pi by 2 modulus sine x dot dx. Please try this question. नहीं Mitri, not 0. एक मिनट समय फिर से चेक कर. Okay. Kush, very good. This is correct. And after this, please start this question. Minus pi by 4. Pi by 4 x cube sine to the power 4x dot dx. Okay. Okay, let's say you have a doubt in this. Toxic. Answer third. Okay. So this is minus pi by 2 to pi by 2 modulus sin x dot dx. ठीक है. लक्ष्य सबसे पहले ये बताइए, this is the even function or odd function? Even. Even. Okay, okay, very good. फिर कितना हो जाएगा?
This will become 0 to pi by 2 twice of modulus sin x dot dx. ठीक है लक्ष्य. Yes, sir. अब हमें क्या करना होता है, हमें मॉड चेक करना होता है इस लिमिट में. मॉडुलस जब भी होगा देन वी नीड टू चेक दैट इस इंटरवल में मॉड पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना. चेक करते हैं. मॉड sin x डॉट x दिस इक्वल, अगर x हम ले रहे हैं, x इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव है ना. 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x. तो हम इस फॉर दिस जैसे हम नॉर्मली करते क्या, मॉड x इज इक्वल टू, हम कहते हैं x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. तो जब भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है देन वी विल टेक x. तो अगर वो आपको इंटरवल दे देता है, वो आपसे कहता है दैट दिस इज 0 to 2, तो आप सिर्फ वैल्यू यही यूज करेंगे है ना. अगर वो आपको कहता है -1 to 2, तो आप ब्रेक करेंगे वैल्यू, क्योंकि -1 to 2 में पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, तो हम इसको ब्रेक करते हैं. और सिमिलरली फॉर दिस इंटरवल 0 to pi by 2 दिस इज पॉजिटिव, तो फिर हम क्या करेंगे, we will take this as 2 0 to pi by 2, okay, and we will take this as sin x dot x. ठीक है मित्री लक्ष्य. Yes. Okay, very good. Now please integrate this and share your notes. Mitri, very good. Kush, very good. That's correct. Then Kush will start the fifth question, and Mitri and Lakshya start the fourth question. And please try this. Minus please try this one. Okay. Fourth, then fifth. And this question came in CBSE 2002 and 4.
Lakshya, very good. That's correct. Then please start the fifth one. Kush, very good. That's correct. Then Kush, okay, ये हो गया. Then please start this one. देखिए ये काफी complicated question है. This is your solved examples from miscellaneous. ठीक है. So जब तक सब और try करें questions, आप इसको करिए. Then I will help you. ठीक है. ये काफी complicated है. शायद नहीं होगा कुछ. Then I will help. थ्री एंड लक्ष्य कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फिफ्थ. मैत्री एंड लक्ष्य फिफ्थ कर रहे हैं. नहीं लक्ष्य नॉट पाई. नहीं 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 नॉट पाई. I will give you the hint, Lakshya. Please rationalize it. ठीक है. Question है. फिफ्थ फोर्थ हो गया ना? Yes sir. हाँ फिफ्थ में प्लीज रेशनलाइज इट. डायरेक्टली नहीं होगा ये, क्योंकि डायरेक्टली हम इवन आउट देखिए इसमें डिसाइड नहीं कर सकते है ना. रूट में फिर नेगेटिव आ जाएगा. सो इसको रेशनलाइज कर दीजिए. टू फंक्शंस आ जाएंगे, फिर उसको करिए.
Maybe not pi. Which one? Fifth? नहीं पाई नहीं है मिथ्री कैसे किया बताएंगे? So rationalize किया था पहले. Okay, let check. Final answer is a pi. A pi नहीं है. Okay, अच्छा आपने a pi. Okay, मिथ्री very good. This is correct. लक्ष्य a pi है answer. Okay. Okay. ठीक है, very good. Please start the sixth one. Sixth is very complicated. Please start it. फिर मैं help करता हूँ आपके. This from NCERT miscellaneous. कुछ fifth answer was pi. Maybe fourth is also 0. Fourth is 0. ठीक है कुछ प्लीज करेक्शन करिएगा. The fifth answer is a pi. ठीक है कुछ लक्ष्य मेट्री. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन और जब नहीं होता है टेल मी, आई विल गिव यू द हिंट. ठीक है, इसमें मॉडुलस का पहले साइन डिसाइड करना है. दैट फॉर दिस इंटरवल व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मॉडुलस. Okay, लक्ष्य आई विल गिव यू द हिंट. अच्छा में 3 माइनस वाली में पॉजिटिव एंड 1 में नेगेटिव. बिल्कुल नहीं. में 3 चेक करते हैं. ठीक है. So the question is 6 minus 1 to minus 1 to 3 by 2 mod x sin pi x mod minus 1 to 3 by 2 x sin pi x dot x. Okay. So Mitri, Lakshya and Kush, first of all we need to check that for this interval ये जो inside function है वो क्या होगा, है ना. For this interval हमें inside function check करना होगा. अगर inside positive है we will write positive. अगर ये negative हो we will just put a negative sign. not solve कर देंगे. अब यहाँ two functions हैं. These two functions are in multiplication. तो हमें separately पहले functions को analyze करना होगा. So first is for x is greater than minus 1 and less than 3 by 2. Okay. For this one. अब x check करना है. x क्या होगा? For this one, लक्ष्य बता सकते हैं. For this interval x क्या होगा? Negative या positive?
So पॉजिटिव कुछ नहीं कह सकते है ना, बिकॉज -1 to 0 तो नेगेटिव होगा, है बीच ना में उसके। नंबर लेना हाँ, पड़ेगा। तो इसका मतलब इस लिमिट को हम ब्रेक करेंगे। जी मित्री बताइए। कुछ ही समय से यही बोल रही थी कि ब्रेक करेंगे ना पहले तो। जी 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 हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हमने ब्रेक किया -1 to 0। ओके, अभी भी और भी इसमें पार्ट्स आएंगे। ठीक है, -1 to x, सॉरी, then 0 to 3/2। ओके, तो फर्स्ट एनालाइज करते हैं x। फॉर दिस वन x is what? x is less than 0। दिस करेक्ट। यस सर। नाउ अब हम चेक करते हैं sin पाई x क्या होगा इसमें। sin पाई x क्या होगा। अब नाउ x, वैल्यू ऑफ x इज दिस वन, बट हमें तो यहाँ पाई x चेक करना है। ओके, let this be 1, so multiply 1 with multiply 1 with by pi, तो ये कितना हो जाएगा, minus pi is less than pi x is less than 0। ठीक है, हमने क्यों किया पाई से मल्टीप्लाई, बिकॉज वी नीड टू चेक साइन पाई एक्स, तो ये वैल्यू तो x है, जब हमें साइन पाई एक्स चेक करना है देन वी नीड पाई एक्स, तो हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस क्लियर कुछ लेक्चर नंबर 3। यस सर। Okay, now this interval is from -pi to 0। Okay, so -pi to 0, can you tell me साइन क्या होगा। अगर डाउट है इसमें, अगर इसमें डाउट आ रहा है, then put any value, for example put sin -pi means -30, oh sorry -180, so put sin -30। please tell me what's the answer, this is negative or positive। नेगेटिव। negative, लक्ष्य this correct, यस सर। है ना। तो चेक करने के लिए क्या करना है, टेक एनी एंगल, तो उससे हमें हिंट मिल जाएगा। ओके, सो x is less than 0 and sin pi x is less than 0। now both are less than 0, then that means x into sin pi x, ये क्या होगा, positive। both are negative, so the multiplication will be positive, so this will be greater than 0। ठीक है, इतना लक्ष्य Yes. this, ठीक है। okay, now we will take next one, next is 0 to 3/2। देखते हैं यहाँ में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, 0 to 3/2। so for 0 to 3/2 लक्ष्य x क्या होगा, greater than 0 or less than 0। So greater than 0. greater than 0, very good। and sin pi x है, sin pi x भी चेक करना है हमें, so multiply this, it just be 2 multiply 2 by pi, तो कितना हो जाएगा, 0 pi x less than 3/2, 3/2। so 0 to 3/2। okay, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 0 to 3/2, 3 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं। नहीं, 3 क्वाड्रेंट्स में 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो इन 3 क्वाड्रेंट्स में साइन डिफरेंट होता है साइन का, so it is not possible for us to decide this। यस सर। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसका मतलब हम 3/2 नहीं ले सकते, we will break this into further one more limit। क्या हो सकती है वो लिमिट, 1/2। no not 1/2, 0 3/2। okay, so 0 in this case, अच्छा मैं जी आप जो कह रहे हैं that is also correct। ठीक है, उससे भी सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, है ना। 0 to 1/2, then 1/2 to 1, but if you will check the sign, then sign is positive in this quadrant and this quadrant। it means 0 to pi तो sign positive होगा, pi to 3/2 negative हो जाएगा, so we will break this limit into x is less than 0 and less than 1, क्योंकि because of this one we will get a pi। हमें ये यहाँ करना चाहिए, for this become 1, and this we can take 1 to 3/2। okay, so multiply by this, तो ये आ जाएगा हमारे पास, this will give us pi। अब डिसाइड करते हैं, so for this one लक्ष्य x क्या होगा,
for this interval? Lakshya, pi. greater than 0? Yes. And sin pi x क्या होगा? ये किस quadrant में lie कर रहा है? 0 to pi. It's in first and second quadrant. So first and second में sin pi x क्या होता है? Positive. Positive. तो greater than 0. Now इनका multiplication क्या हो जाएगा? X into sin pi x. Lakshya. Positive. Lakshya positive होगा? Yes. Okay. Then we will check for this one. 1, 2, 3 pi by 2. अब यहाँ क्या होगा? Let this be 3. Multiply 3 by pi. Multiply 3 by pi. So ये कितना हो जाएगा by pi? So this will give you pi is less than x pi is less than 3 by 2 pi. Okay, so this means third quadrant. Third quadrant. अब x बताते हैं. लक्ष्य x क्या होगा? Negative होगा या positive? Positive. Positive होगा. ये क्या होगा? Sin pi x. Sin pi x क्या होगा? Greater than 0. Greater than 0. Third quadrant. Third quadrant में So less than 0. less than 0. Okay. Mithri, this clear? Yes, sir. Okay. So this greater than 0, this less than 0. तो इनका multiplication क्या होगा? Negative. Negative. तो हम क्या करेंगे? इस लिमिट को ब्रेक करेंगे from -1 to 0. Okay. Modulus x sin pi x dot dx. Okay. Next is plus 0 to 1. 0 to 1. Modulus x sin pi x dot dx plus 1 to 3 by 2. 1 to 3 by 2 modulus x sin pi x dot dx. Okay. So for this one हमारा क्या था? Positive. तो modulus remove करके हम positive sign use करेंगे. For this one we will use positive sign and for this one we will use negative sign. ठीक है, आप कर सकते हैं इसको. लक्ष्य, मैत्री and कुश. Please note down this. ठीक है, start कीजिए. Then I will again help you. Please note कीजिए इसको. मैत्री बताइए. सो वो मैंने जो सर स्टार्टिंग की लिमिट्स ली थी वो मतलब -1 से 3/2 को डिवाइड किया था मैंने. आपने लिया था -1 क्या कहते हैं 1 लिया था. आपने लिया था -1 to 1. यस सर, साइन की वैल्यू क्योंकि इजी रहता. ओके ओके मित्र, वो हम कर सकते हैं, है ना, इफ यू विश, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देन फाइनली यू कैन टेक द लिमिट फ्रॉम -1 to 1, है ना, -1 to 0, 0 to 1. अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपको याद होगा सेकंड प्रॉपर्टी, सो फाइनली यू विल गेट -1 to 1. बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द साइन, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. दिस पॉजिटिव पॉजिटिव, देन फाइनली राइट -1 to 1 x sin pi x dot dx. तो ये क्वेश्चन लेंदी है ना? ये लेंथी है, ये मिसलेनियस में क्वेश्चन है. सर लगभग 4 मार्क्स का तो आ सकता है ना बोर्ड में? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ओके सर. ओके.
ठीक है, मित्री, लक्ष्य एंड कुश, I have a class in 2 minutes. ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं. आप ऑलमोस्ट आप कर लेंगे, बस फाइनली आई विल गिव यू द हिंट. जब आप इंटीग्रेट करेंगे, यू हैव टू फंक्शन x sin pi x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, देन फाइनली पुट द लिमिट्स, जो भी आपके लिमिट्स हैं. तो बाय पार्ट्स यूज हो गए. देयर आर टू फंक्शंस व्हिच आर इन मल्टीप्लिकेशन. ओके, प्लीज ट्राई दिस. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, but please complete it. Okay, so this chapter is complete. We have done all the properties, so the homework is complete chapter. ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे कल हम ट्राई करते हैं, कल डिस्कस करेंगे. एंड फिर tomorrow we will start a new chapter, areas. नहीं मित्री, I have that. ठीक है, not issue. ठीक है, कुश, लक्ष्य, मैत्री, कल तक प्लीज कंप्लीट दिस चैप्टर. टुमारो वी हैव अ क्लास एट 10:30 है, 10:30 पर इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक, बट प्लीज कंप्लीट कीजिएगा इसको, और कल न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू सर. ओके, यू वेलकम. जी मित्री. सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी सर, आपसे निष्का सर ने बात करी थी वो टाइमिंग की. टाइमिंग्स के लिए निष्कर्ष अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो क्लास हो रही है, एक और क्लास. ठीक है, कल फिर आपको बताते हैं. ओके सर. ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर. ओके, यू वेलकम.